Hi everyone, welcome to my channel Cracking Maths with Shufia, and today I am going to start a new topic, simple interest. Sounds heavy, isn't it? But bachcho, don't worry, it's going to be really easy for you. And once again, like, share and most importantly subscribe, as it will keep me motivated to work on more contents. So bachcho, क्या कहना है before starting? Concept clear, there is no fear. Okay, let's get started. सो बच्चों, जब भी हम ये इंटरेस्ट वर्ड को सुनते हैं हमें किस चीज़ का नाम सबसे पहले याद आता है? किसका? हाँ, बैंक का, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी यूज दिस टर्म इंटरेस्ट इन बैंक रिलेटेड केसेस, एंड बिसाइड्स दिस ऑल्सो वी यूज द टर्म इंटरेस्ट लाइक the movie is not that much interesting, I don't have any interest on games, etc. Okay, and let's focus on our maths वाला interest which is a noun. इंटरेस्ट सुनने में जितना हैवी है उतना मतलब कुछ भी डरने वाली बात नहीं है. अब बस मेरा जो 2 वीडियोज़ रहेगा वो फॉलो करना, एकदम इजी हो जाएगा. लेकिन एक बात है, कॉन्सेप्ट समझे बिना किसी भी चीज़ को सीखना वेस्ट है. सो हम कॉन्सेप्चुअली सीखेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप. एंड स्टेप 1 इज़ अंडरस्टैंड द टर्म्स प्रॉपरली. स्टेप 2 अंडरस्टैंड the formulas properly, and step 3 understand the proper use of formulas in the sums. Okay, let's move on to our main topic, interest, and explain it with a simple example. Suppose मैंने बैंक से 50,000 रुपीज़ लोन लिया, मतलब उधार लिया है, और इंग्लिश में बोलते हैं borrowed the money, and after 1 year I will pay back the money to the bank again. But बैंक हमें ऐसे ही नहीं देंगे. आफ्टर 1 ईयर उस 50,000 के साथ हमें कुछ और पैसा बैंक को देना पड़ेगा. सपोज 55,000 उसके लिए देना पड़ेगा, और वो जो एक्स्ट्रा मनी यानी 5,000 एक्स्ट्रा मनी हम पे करेंगे बैंक को ओरिजिनल अमाउंट के साथ, उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं. जी बच्चों, उसी एक्स्ट्रा मनी को इंटरेस्ट बोलते हैं. Sometimes reverse also happens. I mean, bank gives us interest as well. Same theory, we deposit the money in the bank uses our money and in return gives us interest on the amount we kept at a certain rate. So, यहाँ हम बैंक को उधार देते हैं और बैंक हमें interest देता है. So, let's check the terms used in this chapter. Here are the definitions of the terms. Principal, which is denoted by the capital letter P, the money borrowed or deposited in any transaction, maybe with a bank or with a financer or any money lender, is called the principal or the sum. Interest is denoted by I. The additional money paid by the borrower, ये बैंक या any finance company और कोई भी इंसान हो सकता है जिससे भी हमने पैसा उधार ली है, is called the interest. Next, amount denoted by capital letter A. The total money returned by the borrower is called the amount. Total money मतलब जो भी borrow लिया था उसके साथ interest का जुड़ कर return देना पड़ता है, वही amount है. Next, rate. The interest on rupees 100 for 1 year is known as the rate % per annum. Here 2 things we should know properly. The rate of interest remains always on an annual basis, मतलब साल के हिसाब से rate होता है. And secondly, rate is calculated as per 100. So, we write as rate % per annum. Next, simple interest. The interest calculated regularly on the principal. Yes, on the principal. Remember, throughout the loan period is known as the simple interest. So, the simple interest is calculated for the whole period only. Yes, only on the principal. फॉर एग्जाम्पल इफ़ रुपीज़ 1,000 के साथ इंटरेस्ट रुपीज़ 100 आता है, आफ्टर 1 ईयर विल पे रुपीज़ 1,100 टू द लेंडर, एंड आफ्टर 4 ईयर्स विल पे हाउ मच? रुपीज़ 1,400. यहाँ एक्स्ट्रा जो 100 रुपीज़ मिलता रहा उसका इंटरेस्ट हम नेक्स्ट ईयर्स में नहीं लेते या नहीं देते. समझे बच्चों? ओनली रुपीज़ 1,000 जो हमारा प्रिंसिपल है उसका ही इंटरेस्ट काउंट होता है. सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट आता है उसका इंटरेस्ट हम काउंट नहीं करते. सो दिस इज़ सिंपल इंटरेस्ट. एंड नेक्स्ट वन इज़ आवर टाइम. टाइम मीन्स द टाइम पीरियड. इट माइट बी ईयरली, हाफ ईयरली, एट्सेट्रा, बट एज रेट इज़ पर एनम, दैट इज़ एनुअली, वी काउंट आवर रेट. सो इफ टाइम इज़ गिवन इन मंथ्स, then also we will have to convert it into years.
Okay, so next move on to our formulas. So this is formula number 1. SI is equal to P into R into T divided by 100, where P is principal, R is rate, T is time, and SI is simple interest. Number 2, A matlab amount is equal to P plus SI, matlab principal plus simple interest. In our next video, we will solve some important sums using these two important formulas. Now, bachcho, formulas 1 and 2 you memorize it, very much important. Some people say don't memorize anything in maths, but I won't say that don't memorize. Yes, important formulas we should memorize. Rather, I should say we must memorize properly, and not only memorization, in addition, I would say you should write all the important formulas of class 7 in a page and hang it in front of your study table so that every day you can read once to memorize it easily. But yes, without getting proper concept of the terms and formulas, just blindly we should not memorize. First, we should understand the formulas, theory behind the formulas, the terms related to formulas, then you memorize it, so that while doing sums you can save your precious time. You see, using number 1 formula, other 3 formulas also we have found, but I won't say that you memorize those formulas. Only basic formula, which is SI is equal to PRT by 100, you should memorize. Okay, bachcha, hope you have understood the terms and the formulas properly, right? So thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, एंड इफ़ यू हैव लाइक माई वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़. See you in my next video. Till then, bye bye.